Hello everyone, good morning. And it's raining. Hello, hello. It's gonna rain really badly. Long time no see, Prabal. Hello, hello. Hi Ashu, hello. Good afternoon everyone and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by An Academy, and I am Vaishnavi Pandey, the presenter and your English educator. Okay. So where have you been, Prabal? Prabal, कहाँ थे आप? Ravneet, hi Ravneet. Hello. Hola. And bonjour, Ravneet. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? All right. Shubhra, hello. All right. So today we are going to be looking at the 17th Jan ka editorial. Before we move on, let me just talk about um talk about nothing. How have you guys been? Yesterday we did not have the Hindu editorial analysis because कल का newspaper आया ही नहीं था owing to Makar Sankranti and Pongal, right? So that's why we did not have yesterday's issue. So yesterday we did not have the Hindu editorial analysis, but today we will have it. We will have it. Yes, we will. Yes, we will. So अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, please make sure that you do join my channel. It is called Vaishnavi. Gosh. Uh, Vaishnavi_CLAT. Or you can scan this QR code. It will take you straight to my channel. Join करने का फायदा ये है कि टेलीग्राम पे आपको पता चलता है कि कौन कौन से क्लासेस हो रहे हैं मेरे और कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं. Okay, because An Academy operates on many different platforms. Okay, we are everywhere. Anyway, and my code is Vaishnavi10. So let's get started with the words. Good afternoon. Mehek, hi, good afternoon. All right. So, I did not think about this time. Okay. So आज हम कर रहे हैं these are the words. Please make sure that बहुत ज्यादा words नहीं है आज बहुत कम words हैं. लेकिन कुछ कुछ बहुत important words हैं. Okay, जो आपको high frequency words है because these are being used these days a lot. जैसे apartheid. Okay, apartheid is something that is used a lot these days because owing to the issues that is ongoing in the geopolitical scenario, है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोविजनल मार्कशीट्स भी होते हैं, प्रोविजनल मार्क्स भी होते हैं, प्रोविजनल डेटा भी होता है. प्रोविजनल इज बेसिकली समथिंग दैट इज अरेंज्ड और एग्जिस्टिंग फॉर द प्रेजेंट, possibly to be changed later. Okay, अभी तो है ये. Okay, provisional is basically an adjective जिसका मतलब होता है कि ये अभी है, it is existing now, लेकिन आगे चल के probably इसमें changes आएगा, possibly this will be changed later, so it is just something that is existing now, probably won't exist in the future. Okay, that is provisional. When will the quiz happen? Ash, tomorrow. Tomorrow is the day that the quiz will happen, or today itself. I think because आज मेरे पास बिल्कुल भी time नहीं है. I wanted to take the quiz today itself, लेकिन आज बिल्कुल भी time नहीं है. I have got classes after classes, but uh, and my last class is getting over at 8:30. After that, I don't think I will be able to operate. So let's see. Tomorrow, definitely you will have the quiz. Okay, I have got 50 questions. I have prepared the 50 questions, and this session will not be included in those 50 questions. इसके अलग से होंगे. Okay, I'm so sorry that we
I rescheduled it twice, but it could not happen. I'm sorry about that, but it will happen. Okay, do not worry. Just wait for it to happen. It will happen tomorrow. Okay, I promise you. Tomorrow is the day that we are going to take special class में in vocabulary words का quiz. Okay, so stay tuned, everyone. Om Shri, hi, good afternoon. Richa, good afternoon. Harshika, good afternoon. Good afternoon. And they say that the South Africa can empathize with genocide because it too faced apartheid. Yes, okay, so good. Navasha, hi. Good sentence, Prabal. Good sentence. Ma'am, your special class happens. Yes, I have not taken a single special class in January, but it will start. I will start from tomorrow onwards. You will have special sessions, okay? Because of I was facing a lot of technical issue in special sessions. That's why I could not take it. Lekin kal onwards, you will have special session every day, either for 3-year LLB or it will be for 5-year LLB. I will let you know कि किसके लिए है. 5-year LLB के जो quiz होंगे, 3-year LLB can also participate in it. Like this one will be for 5-year LLB, but 3-year LLB people can also participate in that quiz. Okay. Because it will be something benefiting for you as well. अभी तक हमने reading comprehension और ये सब का quiz नहीं लेना शुरू किया है, so it is something that will benefit you as well. Okay, so okay. Yeah, there was some issues that we were facing on the website. So don't worry about it. Tomorrow onwards, everything is set. I will be giving you special class के and mostly special class में we will just be having quiz after quiz. तो जितने भी sessions हुए हैं उसके ऊपर क्विज होगा. ओके, बी इट vocabulary, be it parajumbles, be it और क्या कहते हैं एरर स्पॉटिंग, हम सब पे क्विज करेंगे. ओके, तो लेजिटिमेसी क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल. ओके, लेजिटिमेट इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ बीइंग समथिंग. किसी चीज की क्वालिटी होती है कि वो लीगल है कि नहीं है. ओके, इफ समथिंग इज लेजिटिमेट, ओके, दैट मीन्स इट इज लीगल. ओके, इट इज लीगली recognized as something being not forbidden, okay, by the law. Okay, so legitimacy is the quality of being legal. Okay, that is legitimacy. This is a noun. Okay, so legitimate is the adjective form. Okay, legitimate business, legitimate office, legitimate papers, legitimate um, a legitimate policy. Okay, so all that, or legitimate scheme. Okay, so all that is adjective. Legitimacy is the noun form. Okay, so testing the legitimacy of something is the noun form. Okay, preliminary. Okay, preliminary is an adjective. Okay, preliminary is an adjective जिसका मतलब होता है, so we have seen adjective, noun, adjective. Okay, so preliminary is coming before or done to prepare for a main or more important action or event. So preliminary hearing आप बहुत ज्यादा सुनते हो. Okay, so preliminary hearing is the hearing that happens before the main hearing. Okay, वो that is to prepare for the main hearing. Okay, all right, so it is definitely, देखो यहाँ पर ये hearing is the noun. Okay, noun form hearing, ing लगा है, इसका मतलब नहीं कि ये verb है. Okay, hearing हमेशा hearing ही बोलते हैं इसको. Okay, in court. Okay, so you have hearings in court. Okay, so hearing is a noun. Okay, बेसिकली अ जेरंड, बट ठीक है, नाउन है. ओके, और ये एडजेक्टिव है. ओके, एडजेक्टिव है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हियरिंग इट इज. इट इज अ प्रिलिमिनरी हियरिंग. ओके, कमिंग बिफोर और डन टू प्रिपेयर फॉर अ मेन और इंपॉर्टेंट एक्शन. ओके, हाय गुरनूर. Hey, yo. Hmm. According to the provisional answer key, yes, my rank in CLAT was 2000 to 3000, but due to high cutoff, my rank came at 7,000. Very nice, Prabal. Good job. Good job. I mean, good job on making the sentence. uh, अब क्या ही कर सकते हैं on the marks, but good job on the sentence though.
Madhavi, the scheme could not be operated until its legitimacy was proved. इट्स में अपोस्ट्रोफी यहाँ नहीं होगा माधवी. इट्स और ये जो आप लिखते हो ना, इट्स दैट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज. ओके, तो इसको हमेशा इट इज ही पढ़ना. अगर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो इट इज. ओके, सो इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, सो it's raining. Okay, so in that case it is raining. Okay, but we are talking about अगर नॉन लिविंग थिंग या इनएनिमेट थिंग या किसी एनिमल का पोजेशन बताते हैं तो हम इट्स लिखते हैं, विच टॉक्स अबाउट पोजेशन और बिलोंगिंग. ओके, पोजेशन और बिलोंगिंग के बारे में बात करता है. ओके, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. ओके, रिमेंबर दैट. गुड जॉब दो माधवी. The scheme could not be operated until its legitimacy was proved. Okay, and Navasha, what all have we completed and discussed till now? I was having a lot of network problem in the first 15 minutes. Navasha, basically, I told one thing that I said was special class kal se honge, okay, and the quiz will happen tomorrow, okay. The quiz of 50 questions on vocabulary, 2 घंटे का जो महा quiz हम लेने वाले हैं for the first 2 weeks of January, जो editorials पे based है वो कल होगा, okay. 2 घंटे का quiz होगा. And tomorrow onwards, all the special classes will also start in I will start conducting special classes as well from tomorrow onwards. Okay, that's what I said. Okay, other than that, we discussed provisional, legitimacy, and preliminary. Okay, garner is a word जो आप देखोगे. सलमान, बहुत ठंडा लग रहा है मैम आज. मुझे भी सलमान बहुत ठंडा लग रहा है. इनफैक्ट आई गॉट अ कोल्ड. इतना ठंडा लग रहा है सलमान, क्या करे. क्या ही कर सकते हैं. Oh my God. What is up with what happened to my, why am I completely gone? Okay. I thought you are, no, you are live. Hmm. Wow, Salman. क्या अच्छी अच्छी बातें करते हो. मजा आ गया. Okay. Okay. Next word is garner. Okay, garner is a very very important word. ये high frequency word है. Generally जब हम votes के केस में देखेंगे, election के time पे देखेंगे, तो you will see this word appearing very often. Okay, तो क्या होता है गार्नर का मतलब? गार्नर का मतलब होता है गैदर या कलेक्ट. ओके, गैदर या कलेक्ट. ओके, स्पेशली इंफॉर्मेशन या अप्रूवल. सो गार्नर वोट्स के केस में आप देखोगे कि दिस पार्टी इज ट्राइंग टू गार्नर वोट्स और गार्नर्ड सम वोट्स फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ओके, सो गार्नर का मतलब होता है गैदर या कलेक्ट. ओके, आपका सेंटेंस गुरनूर कहाँ है? कहाँ है गुरनूर? कहाँ है? And I have selected all messages. Okay, so please don't tell me again to select all messages, not just top messages. Your comment is not visible then, Gurnoor. Ravneet, okay. The preliminary meeting of the board of directors ended with a provisional solution for the problem raised, but the students and parents still worry about its legitimacy. The chairman said that this ad hoc action has been taken after garnering all the past suggestions given by parents themselves. Very nice, Ravneet. Wow, आज आपने फोड़ दिया. Very nice.
हाँ लाइव चैट करा गुरनूर, लाइव चैट, लाइव चैट। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। नहीं आया। ओके, ad hoc is an adverb or it can also be used as an adjective, जैसे रवनीत ने adjective की तरह use किया। okay, when necessary or needed, so जब जब उसकी जरूरत पड़ती है, when necessary या needed, तो ad hoc अगर adverb है तो last में use होगा। okay, adjective है तो noun के आसपास use होगा। okay, so that's the only difference। okay, so when necessary or needed, okay, as necessary जब requirement हो तब उसको उसका इस्तेमाल किया जाए, that is ad hoc। okay, ad hoc। Ram Narayan, is 2 months enough time to crack MHCT 3 year law? राम नारायण, अगर आप मेरे से पढ़ेंगे अंग्रेजी, तो मैं अंग्रेजी के लिए मैं बता रही हूँ कि हाँ 2 महीने काफी है। ओके, मोर देन इनफ है। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं बोलूंगी। ओके, लेट्स बी रियलिस्टिक। ओके, बिकॉज आई जस्ट हैव आइडिया अबाउट इंग्लिश, सो आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। सो 2 months इनफ, 3 months इनफ। 2 दिन के पहले भी लोग पूछते हैं कि 2 दिन क्या काफी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। 2 दिन पहले तो डेफिनेटली नहीं पॉसिबल है लेकिन 2 महीने पहले अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, परिश्रम 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 ओके कर रहे हैं, तो पॉसिबल है। ओके, apartheid, okay, apartheid is a noun। okay, apartheid is also something that is a high frequency word। ad hoc is also a high frequency word। okay, ad hoc, prima facie, ये सब फॉरेन वर्ड्स बहुत अभी यूज में। स्टेटस को, ओके, इज अगेन, आप दूसरा एडिटोरियल देखोगे, इसी कॉलम वाला एडिटोरियल जो था, उसमें जो दूसरा एडिटोरियल था चाइना और ताइवान के बारे में, उसमें you see status quo दिया हुआ है। okay, status quo is another important word that you must remember। okay, apartheid is a noun जिसका मतलब होता है in the past in South Africa a system under which people of different races were kept separate by law and white people were given more political rights and educational and other advantages। okay, so apartheid was, इस पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी आया था। okay, so any sort of racial discrimination को कहते हैं apartheid अब। okay, apartheid is basically any sort of racial discrimination होता है तो उसको apartheid कहते हैं। okay, then we have genocide। okay, it originated from South Africa, but it is, okay, again used in different situations where racism happens। okay, Mhm. Yeah, if you start from today, that's what we are talking about। Trouble, the genocide performed by the dictator of Germany, Adolf Hitler, was termed as Holocaust by the historians। very nice, Prabal. Good job, good job। गुरनूर जरूर कुछ उल्टा सीधा लिखा है, इसीलिए गुरनूर एकदम, गुरनूर को चाहिए कि ये पहुंच जाए चैट बॉक्स में, लाइव चैट में। आई एम श्योर। आई एम श्योर इट इज समथिंग डिस्टर्बिंग, that's why Gurnoor is so anxious to put it in the live chat। okay, he has garnered extensive support for his proposal। very nice, Aditya, good job। Aditya, आप कहाँ थे? Where were you all this all this while? Madhavi, a preliminary hearing was set up after garnering information about the provisional law to determine its legitimacy ad hoc। okay, very nice, Madhavi, good job। नहीं गुरनूर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यू मेक अनदर सेंटेंस, probably a decent one, probably a word that is not getting filtered out। make that sentence। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मत भेजो। we had to make some
ad hoc changes to the plans. Very nice, Aditya. Good job. That is also fine. Okay. Again, this thing, why am I visible like this, like in patches of camouflage, invisible parts of me? Yes, it is regarding killing people in a very unusual way. I knew it. I knew it, Ravneet. I knew it. I was sure this was something graphic. That's when Gurnur is like, I want to send this. I want to send this. But why am I not visible properly? What is wrong? All right, genocide is a CID जब भी आता है it is related to killing. ये ध्यान में रखना, okay? Killing से related है CID, okay? So suicide, matricide, patricide, insecticide, pesticide, infanticide, genocide, regicide, all these sides are related to killing, okay? Killing से related है. So genocide is is noun जिसका मतलब होता है the crime of intentionally destroying parts of or all of a nation, ethnic, racial, or religious group by killing people or by other methods. Okay, so genocide is generally related to killing people. Okay, mass killing, बहुत लोगों को एक certain nation के बहुत लोगों को मार दिया गया, या एथनिक एक सर्टेन एथनिसिटी के लोगों को बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों को की किलिंग हुई है, या रेशियल एक सर्टेन रेस के लोगों की बहुत सारी किलिंग हुई है, या रिलीजियस ग्रुप के बहुत सारे लोगों की किलिंग हुई है. ऑल दीज आर जेनोसाइड. ओके, मैं नहीं पढ़ रही गुरनूर. The professor called an ad hoc meeting to discuss the result of the experiment. Very nice, Om Shri. Very nice. Good job. All right. I think this angle is fine. You know? Okay. Now the next word is Holocaust. Okay. Holocaust is basically a very large amount of destruction, especially by fire or heat, or the killing of very large members of people. Okay. Large number of people. Okay. Large numbers of people is Holocaust. Okay. So, the Jews Holocaust हम सब जानते हैं. Again, what Prabal mentioned about about Adolf Hitler. So ethnic cleansing कर रहे थे, and that was the Holocaust. Is the period where a lot of mass killing of Jews happened. Okay, उनको they were being burned alive. They were okay. A lot of heinous acts were done. Okay, so Holocaust is that a large amount of destruction. Holocaust बहुत important word है. History में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे cases of Holocaust, and the biggest one, like we mentioned, was the Holocaust of the Jews. Okay, a very large amount of destruction, especially by fire or heat or the killing of very large number of people. All right, that is Holocaust. Okay. The apartheid was the reason for much of the racial tension in South Africa. Very nice, Aditya. Good job. Gurnoot, banana, please. Make some decent sentences, Gurnoot, please. Let's not throw tantrums over here, okay? Let's behave like mature adults that we are. All right, moving on to the next one. Boycott. Okay, so so the words that we saw in this set of words, very very important words. Provisional देखा हमने, legitimacy देखा, preliminary देखा, garner देखा. Garner is a verb form that means you can change it to garnered and garnering as well. Okay, ad hoc देखा, which is an adverb. Apartheid देखा, which is a noun. Genocide देखा, noun again. Holocaust देखा, noun again. Okay. That's a good statement, Gunur. Unfinished but still good statement. I boycott what? Question mark. What are you boycotting? So here you are making sentences. I knew it.
Boycott is a verb, okay, to refuse to buy a product, okay, or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval, okay. Uh, Mahatma Gandhi organized various agitations against the policy of apartheid. Very nice, Om Shri, good job. For the past 100 years, oh no, sorry, the past 100 years have been a dawn in the darkness of history. The word emerged as history, full stop. The word emerged as a harmonious family coming out from the problems like colonization, apartheid, and Holocaust of the World War. Very nice, Ramneet. Good job. So you made one sentence. I boycott making sentences. That's a sentence. Ha ha ha. All right. Okay. And the genocide. Okay. Where? It appears that not every genocide is entitled to our remembrance. Very nice. It appears that not all genocide, okay, all genocide is entitled to our remembrance. Very nice, Aditya. Prabal, is mass killing of people based on their race, or someone asked that? Difference between genocide and Holocaust. Genocide is basically killing off a large number of people. Okay, Holocaust is involves fire, and it involves you know, killing and burning and destroying a lot of things as well. Okay, so that is the difference. Okay, and genocide done by Nazis is termed as Holocaust. Yeah, the museum is devoted to the Holocaust. Very nice, good job. It okay to insert a micro bomb in someone's ear and blast it if ad hoc? No, it's absolutely not okay. Navasha, Mahatma Gandhi requested Indians to boycott British goods and promote Swadesh materials. Very nice. Good job, Navasha. Good job. This year, Pakistan did ceasefire violation multiple times. Multiple times, not a multiple times, okay? ठीक है, expressing disapproval. Ceasefire is a noun which means an agreement, usually between two armies, okay, to stop fighting in order to allow discussion about peace, okay. सो सीज फायर इज द इवेंट, ओके, एक अग्रीमेंट होता है कि लेट्स से दो नेशंस लड़ाई कर रहे हैं, ओके, इधर से भी गोलीबारी हो रही है और इधर से भी गोलीबारी हो रही है, एंड देन दे डिसाइड कि अब टाइम आ गया, अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा वी स्टॉप दिस फाइटिंग, ओके, वी स्टॉप दिस fighting, and we come to some sort of terms and agreements, okay. So that is called ceasefire, an agreement, okay, usually between two armies to stop fighting in order to allow discussions about peace, okay, ताकि peace का discussions हो सके, okay, कि क्या इसका solution क्या है, okay, we cannot keep fighting. Okay, rhetoric is the last word. Rhetoric is speech or writing intended to be effective and influence people. Okay, rhetoric is generally used ki iska the president's rhetoric or the prime minister's rhetoric or the politician's rhetoric, okay, was intended to uh, deviate people or something like that, okay. तो ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई जाती है, लोगों को परसुएड करने के लिए बनाई जाती है, okay. So that is rhetoric, okay. Okay,
This boycott started, the boycott started online, but it's now moved into real world. Very nice, Aditya. Good job. Simple and sweet. Madhavi, all the nations want ceasefire to take place in Gaza, but a very few of them are willing to take a stand for it. Very nice, Madhavi. Good job. Hitler used his rhetoric ways to influence people and spread hate against the Jews, which he did not believe, which who he did not believe, whom he did not believe to be of pure race. Okay, Prabal, good job. Mir, he declared a ceasefire yesterday and he didn't stop firing at us from from 6 in the morning until 11 a.m. Very nice, Mir. So what was the point of ceasefire? Mir, the audience was impressed by the rhetoric the young girl used in her speech. Very nice, Mir. Good job. Yes, I realized as soon as I posted. Okay. Good job, Prabal. Good job. So congratulations to a CLAT topper 2024, Yashashvi Dhakar with All India rank 8. And these are our top rankers who have now enrolled in top 80 NLUs, and we are still counting. So unlock the power of learning. Get 20% off on all Unacademy CLAT के plus subscription पे आपको 20% off मिल रहा है. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in plus batches, and this offer is valid till 18th of January. Again, the same offer applies for CLAT Iconic subscription, 20% off mil raha hai, which is a huge amount of savings. So you can use my code Vaishnavi10 to enroll, to subscribe to any of the iconic batches, and again you can use my code Vaishnavi10 to subscribe. Okay, but this offer is also valid till 18th of January. Unacademy Law Admission Test, ULAT. CLAT 2025 के लिए, it is here again. It is happening on January 20th and 21st, 4 p.m. So you have an opportunity of getting 90% scholarship. Okay, तो अगर आपके अच्छे रैंक आए और 90% scholarship भी मिल सकता है आपको, जिसकी वजह से आपकी 90% आपकी फीस बहुत सारी माफ हो जाएगी. ओके, टॉप रैंकर्स, टॉप 10 रैंकर्स विल गेट 2500 का गिफ्ट वाउचर. ओके, सो do take the test. Spartans batch is a batch for CLAT and ALET 2025. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. Maestro batch is a batch for MHCT and CUT UG 2024. I'm taking English language in this batch, so you can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. It is available at a discounted price of 9,599 only. CLAT Iconic program के फायदे क्या है? You get everything that you get in plus raise a hand feature, live mentoring sessions मिलते हैं, detailed physical notes मिलते हैं that will be delivered at your doorstep, printed full length mock test that will be delivered at your doorstep, and you will be able to attend offline mock test at our Academy Center. All right, pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. सलमान आप कहाँ चले गए थे? सोमेश कहाँ चले गए थे आप? Why were you not there? My rhetoric speech made everybody stand up in honor. Okay, made everybody stand up in honor. Okay, not to stand up in honor, stand up in honor. Hello, Anonymous. Long time no see. Long time no see. Okay. Oh, I was listening. Great. Good job. Um, how many minimum marks are compulsory? Okay. Again, this is not the class for that. Mere My rhetoric speech मैंने पढ़ लिया ये वाला सलमान. The UN wants ceasefire in Palestine and Israel war, but the UN have failed to do so. Have failed to accomplish so. Okay, good job.
No, anonymous. Now you will stick till the very end, okay? What is this? You come say hi. Hi. Okay, hi. And then you say bye. Uh-uh. Okay, historic hearing. Pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Make sure that you're following the line, okay? Historic hearing. Okay, this is the title given. A provisional order by the ICJ on Israel will cast shadow on legitimacy of its war. Okay, so basically it is talking about the, this becomes the conclusion. अभी जो ऑर्डर मिलेगा आईसीजे की तरफ से, ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इजराइल को, उसके वजह से बहुत काले बादल आने वाले हैं इस इनके वॉर के लेजिटिमेसी के ऊपर, ओके, वेदर द वॉर विल बी कंसिडर्ड लीगल और इलीगल, ओके, सो दैट इज द कंक्लूजन, ओके. Okay, anonymous, bye. Yes, you're welcome, you're welcome. Fair enough. Do revise, अच्छे से पढ़ना anonymous, अच्छे से पढ़ना, okay. All right. What's worse than a baby in a dumpster? A baby in two dumpsters. The rhetoric joke made chaos. Why do you make me read all this, Gunur? Why? But why? What's the purpose? I really want to know. What's the purpose? What kick do you get out of this? Okay. So let's get started. अरे सोमेश, इधर आओ. नहीं, आप नहीं जा सकते. Anonymous is not even लॉ का स्टूडेंट, ओके, दैट्स व्हाई आई सेड ओके जाओ अच्छे से पढ़ना. बट व्हाट, मम्मी बुला रही है, मम्मी को आप वहां बुलाओ. मम्मी के पास लैपटॉप लेके जाओ और मम्मी के पास सुनो बात क्या बोल रही है. कहीं नहीं जाना है, पूरा कंप्लीट करके जाना है. सोमेश, व्हाट इज दिस? मम्मी बुला रही है. हाँ, मैं भी चला ब्रो सोमेश. Anonymous is not, he is preparing for IIT or something, or he's an IIT student. I don't know, but he's not. He's not a law student, okay? But he comes to the class and he learns and he sometimes makes sentences, so it's okay. Okay. Whatever the outcome of the preliminary hearing at the International Court of Justice, ICJ, at the Hague. Okay, what is the Hague? कोई बता सकता है मुझे Hague क्या है? What is the Hague? The Hague. What is Hague? South Africa's case against Israel's ongoing military campaign in Gaza has garnered global attention in a way no proceeding at this elite interstate forum may have done before. Okay. Yes. Yes, it is in Netherlands, okay, and वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, okay, the Hague पे, okay. So basically, what it is saying is the main idea of this editorial is it says that कि कोई भी कोई भी इशू इतना उनका अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया था आईसीजे का, जितना इस इशू को अटेंशन दिया है इन्होंने. ओके, ये जो इंटर स्टेट फोरम
ने जो इस इशू पे जितना फोकस किया है उतना आज तक किसी इशू पे नहीं फोकस किया है. ओके, सो प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग, साउथ अफ्रीका केस. साउथ अफ्रीका ने केस किया है अगेंस्ट इजराइल्स ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन इन गाजा हैज गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन. और जितना ग्लोबल अटेंशन इनको मिला है, ओके, कोई भी और प्रोसीडिंग को इतना ग्लोबल अटेंशन नहीं मिला है. ओके, दिस इज व्हाट द मेन आइडिया इज. ओके, so moving on to the rest bit of it. As the 15-member court assembled along with two ad hoc judges, okay, representing South Africa and Israel, quite a bit of history must have weighed on the parties. Okay, so basically 15 member court assemble हुए दोनों साइड से representative South Africa और Israel से. So this must have brought in a lot of history. Okay, of the two countries on either side of this dispute over whether the Gaza war is aimed at wiping out the people. One has left behind its apartheid past, but believe that the other is practicing 75 years of apartheid against the Palestinian people since 1948. Okay, so one side and the other side. Which is the one side and which is the other side that we are talking about? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों कंट्रीज ईदर साइड ऑफ द डिस्प्यूट, दोनों कंट्री जो साउथ अफ्रीका एंड इजराइल, दोनों दो साइड ऑफ द डिस्प्यूट है. ओके, दे आर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जब केस किया है इजराइल पे, तो डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट दे आर अगेंस्ट ईच अदर. ओके, सो अब क्या बोल रहा है कि किस चीज डिस्प्यूट क्या है, कि गाजा वॉर क्या है इसका एम, वेदर इट इज द एम टू वाइप आउट वाइप आउट द पीपल. One has left behind its apartheid past, but believe that the और लेकिन इन्होंने साउथ अफ्रीका ने अपना अपार्थाइड पास्ट पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इनको ये मानते हैं कि दी इजराइल जो है 75 years ऑफ अपार्थाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट. ओके, सिंस 1948. ओके, दिस इज व्हाट दे बिलीव. ओके, one firm in its belief that it is acting in the interest of justice and humanity, the other equally firm in its belief that it can never be accused of genocide, a crime that was sought to be prevented by the Genocide Convention of 1948, a treaty to prevent the sort of holocaust the Jews people had suffered. Okay, so basically दोनों साइड के बारे में बता रहा है कि एक साइड ऐसे बोल रहे हैं कि बेसिकली ये इनजस्टिस हो रहा है, कि वो मानते हैं. ओके, साउथ अफ्रीका बेसिकली वन साइड इज सेइंग कि साउथ अफ्रीका इज सेइंग कि ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी. ओके, और दूसरा साइड बोलता है कि हम जेनोसाइड कर ही नहीं रहे, इसको जेनोसाइड माना ही नहीं जा सकता. ओके, क्योंकि जेनोसाइड प्रिवेंट हो गया था जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 में. ये एक ट्रीटी साइन हो गया था, अ ट्रीटी टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ हॉलोकॉस्ट, जो हॉलोकॉस्ट जूस ने फेस किया था उसको उसको नहीं वापस वो फेस करे, इसके लिए एक ट्रीटी साइन किया गया था, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948. उसके बाद उनका जेनोसाइड हुआ ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है. ओके, both countries spent many years in the last century in diplomatic isolation as countries, and sporting bodies boycotted them, but both had the support of their western allies. Okay, तो दोनों countries में common क्या है, अब दोनों एक दूसरे के बारे में क्या belief रखते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक बताया गया है. and now it is talking about कि कैसे दोनों countries बॉयकॉट कर दिए गए थे. ओके, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पहुंच गए थे. ओके, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था अपने बाकी आसपास के देशों से, लेकिन क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इन्हें, लेकिन दोनों को वेस्टर्न एलाई से सपोर्ट मिला है, अपने वेस्टर्न एलाई से सपोर्ट मिला है. टुडे
Say for those few allies, the entire world support a ceasefire in Gaza to end the epic suffering of its people. Okay, तो आज भी देखा जाएगा तो कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज है जो इनके allies है, वेस्टर्न allies हैं, बस वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया बोल रही है कि यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए गाजा में, और ताकि पीस टॉक्स हो पाए। ओके, और बहुत सारा सफरिंग हो गया है, एपिक सफरिंग हो गया है ऑफ इट्स पीपल। इतना सफरिंग बहुत ज्यादा, दे हैव सफर्ड अ लॉट, so it should stop and we should they are supporting ceasefire. Okay. हेलो अपूर्वा, नमस्ते, आज बहुत लेट हो गई। ऑल राइट, so moving on to the next paragraph. At this preliminary stage, okay, अभी जो स्टेज है, okay, South Africa sought to demonstrate that some of the Israel's act were capable of falling within the terms of genocide convention, and that there was genocidal intent behind its act. Okay, तो साउथ अफ्रीका का मेन मकसद यही था इस पूरे इस पूरे केस में, कि वो ये बताए कि ये जो इजराइल कर रही, ओके, इट कम्स अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन में जो टर्म्स थे उसको, दे आर definitely not within the terms of the genocide convention. Okay, और ये इनके पास genocidal intent थे, okay, behind these acts. Okay, तो ये साउथ अफ्रीका का अटेम्प्ट था। It relied on data on deaths and destruction and the collapse of civilian life and health infrastructure in Gaza. तो इन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि देखो कितना डेटा हमारे पास, कितना डेटा है कि कितने डेथ और डिस्ट्रक्शन हुए, सिविलियन लाइफ तो पूरी कोलैप्स हो गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बर्बाद हो गए हैं गाजा में। ओके, इट ड्रू अपॉन statements attributed to key Israeli government figures to underscore what it called genocidal intent. Okay, तो किस चीज को वो जेनोसाइडल इंटेंट बोल रहे हैं, उस चीज को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने क्या दिखाया, कि इजरायली गवर्नमेंट फिगर्स दिखाए। ओके, जस्ट टू हाईलाइट कि देखो ये जेनोसाइडल इंटेंट था। ओके, दिस वाज जेनोसाइडल इंटेंट। ओके, the provisional measure sought includes a suspension of military operation and steps by the parties to prevent the occurrence of genocide. Okay, तो ये जो प्रोविजनल मेजर्स हैं उसमें क्या क्या मेजर्स लिखे गए थे। ओके, प्रोविजनल मेजर्स जो प्रेजेंट में मेजर्स लिए गए हैं उसमें इंक्लूडेड अ सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्टेप बाय द पार्टीज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ जेनोसाइड। ओके, तो ये सारा कुछ करना था उनको। ओके, अब देखो, Israel described the South Africa case as blood libel before the hearing, but sought to make a case that its Gaza operations were a legitimate response to the terrorist attack on October 7th last year. Okay, so basically पहले तो उनको blood libel बोल दिया गया। okay, उन्होंने उनको blood libel बोल दिया साउथ अफ्रीका को, इजराइल ने। उसके बाद शुरू से उन्होंने ये बोल दिया, उसके बाद फिर जब ये इन्होंने ये केस बनाया तो ये इस पे इनका ये कहना था कि गाजा का जो रिस्पांस था वो बस एक टेररिस्ट अटैक का रिस्पांस था जो अक्टूबर 7 को लास्ट ईयर पे हुआ था, उसका रिस्पांस दिया है गाजा। ओके, इट वाज नॉट जेनोसाइडल कन्वेंशन, इट वाज नॉट जेनोसाइडल इंटेंट। ओके, इट प्लेड डाउन द रेलेवेंस ऑफ इट्स लीडर स्टेटमेंट, कॉलिंग देम मियर रिटोरिक। ओके, तो जो इनके लीडर्स जो रेफरेंस दे रहे थे, ओके, लीडर्स जो बोल रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो इनके बोल रहे हैं, ओके, अम, उसको दे आर प्लेइंग इट डाउन, मतलब उसको ये बोल रहे कि ये तो बस एक रिटोरिक था टू इन्फ्लुएंस पीपल, जस्ट टू इग्नाइट दैट फायर इन पीपल, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुल टोन इट डाउन कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे थे। ओके, टू टू just for this was just a statement to the people of जनता के लिए था बस एक स्टेटमेंट। ओके, इट attributed the civilian casualties to Hamas
using civilians as shield and hospitals as storage for explosive and launching pads for attacks. Okay, so basically इन्होंने जितने भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुए उसको किसको एट्रीब्यूट कर दिया, हमास को एट्रीब्यूट कर दिया कि ये हमास का है कार्य। ओके, क्योंकि वो सिविलियंस को यूज कर रहे हैं एज शील्ड्स। ओके, और हॉस्पिटल्स को यूज कर रहे हैं एज स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड लॉन्चिंग पैड्स फॉर अटैक्स। ओके, तो ये हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, द इश्यू बिफोर द कोर्ट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बोल रहा है कि अब जो इश्यू है कोर्ट के पास ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, बट द लार्जर कंसर्न इज वेदर इजराइल विल अबाइड बाय एनी प्रोविजनल मेजर। ओके, ये जो केस है ये तो बहुत सिंपल केस है कोर्ट के सामने, बहुत सीधा सीधा केस है, कोई इसमें ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है क्योंकि स्टैट्स एंड फिगर्स एवरीबडी इज लुकिंग एट इट। लेकिन कंसर्न ये है कि जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा क्या इजराइल गवर्नमेंट विल अबाइड बाय दीज मेजर्स। ओके, विल दे अबाइड बाय दीज प्रोविजनल मेजर्स, जो अभी के लिए मेजर्स लिए गए, क्या ये सुनेंगी वो मेजर्स को। ओके, सुनेगा वो मेजर्स को। It says Russia ignored an ICJ order to suspend its operation in Ukraine in March 2022. Okay, so Russia ने ignore किया था। Okay, तो ऑथर रिलेट कर रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर से एंड बोल रहा है कि रशिया ने आईसीजे के ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया था, तो इट इज मोस्ट लाइकली दैट इजराइल विल डू सो as well. Okay, however, there is little doubt that any provisional measure will cast a shadow on the legitimacy of Israel's Gaza war. Okay, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी प्रोविजनल मेजर जो लिया जाएगा ये इनके लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन तो उठाएगा। ओके, जैसा भी जो भी प्रोविजनल मेजर्स आईसीजे बताता है या तो ये फॉलो करते हैं या तो नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन इसके इनके लेजिटिमेसी पे तो सवाल उठेगा। ओके, इजराइल के गाजा वॉर के लेजिटिमेसी पे। ओके, इफ दे डू नॉट फॉलो दीज प्रोविजनल मेजर्स अगेन दे विल बी कंपेयर टू रशिया। ओके, इफ दे even if they follow these legitimacy these provisional measures, then probably there will be ceasefire and so on and so forth. Okay, so civilian casualties कम होगी, तो basically किसी ना किसी तरह का प्रभाव तो पड़ेगा इन पे। Okay, that is what the author is saying. Okay, hmm so basically the type is compare and contrast. Okay, compare and contrast है। Okay, two sides of things देख रहे हैं। Okay, so that is द टाइप ऑफ द एडिटोरियल। लेकिन अगर हम टोन देखिए इस एडिटोरियल का तो टोन कंप्लीटली एनालिटिकल है। ओके, टोन इज एनालिटिकल एंड प्रोबेबली आप पेसिमिस्टिक कह सकते हैं। ओके, पेसिमिस्टिक कह सकते हैं बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कास्टिंग शैडो। ओके, कास्टिंग शैडो ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ इजराइल। ओके, सो इट विल कास्ट अ शैडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ इजराइल गाजा वॉर। ओके, सो it will have an impact on it. Okay, so it will have um, an impact on it. So it is just analytical. Okay, the author is not saying good impact, bad impact. Okay, casting a shadow is definitely a bad impact on their legitimacy, but the issue is definitely so pessimistic. Okay, so pessimistic would also be correct. All right, so these are the tones of today. All right, so that is it for today. Thank you everyone for attending the session. I will see you again at 2:45. Those who ISIS is not binding on the world due to all countries being sovereign. Yeah, okay. अपूर्वा, मैंने बताया है इस क्लास के स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि कल आपका क्विज होगा। ओके, कल एडिटोरियल वोकैबुलरी क्विज होगा। ओके, so just wait till tomorrow and we will have the quiz. Okay, all right, thank you everyone, bye bye, take care, auf wiedersehen, au revoir.
You guys too have a great day. Thank you. Thank you. नवाशा स्पेशल क्लास में बस क्विज होंगे ओके मेनली टारगेट वी द मेन टारगेट विल बी क्विज ओके ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डन टिल नाउ ओके सो बस क्विज क्वेश्चंस होंगे बस हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे स्पेशल सेशंस में ओके मजा आएगा सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड स्पेशल सेशन एज वेल ओके थैंक यू एवरीवन टेक केयर बाय बाय